Let's proceed further. एक बात इसमें और बता दें, इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या डिस्क्वालिफिकेशन 60 आर्टिकल 63 से हट कर दे सकती है? और अगर कोई डिक्लेरेशन वो कर दे कि इज डिस्क्वालिफाइड और वो डिस्क्वालिफिकेशन 63 में नहीं आता, नहीं क्या उसकी बुनियाद पर नहीं फॉर इवन फॉर सिंगल डे ही कैन बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग? Election tribunal has to decide on the basis of 62 for qualification. No, disqualification is 63. This is clear. If any declaration is made by the tribunal which is not in accordance with Article 63, whether on that basis, even on the declaration of tribunal, somebody can be debarred from life or even for a day. No, my lord. Without trial cannot. Even trial is conducted, the tribunal come to even after trial it cannot. वो कह देता है कि disqualified. Without the ground given in 63, he cannot. Mr. Forum, could we just summarize what's happened? Your submission is that first of all, disqualification can only come through a plenary court of plenary jurisdiction, plus the election tribunal and the appellate forum hearing that election tribunal's appeal. That's one. And declaration cannot come from any other source. मैं कुछ और कहना चाहता. So this we've understood. I'm just saying that the premises on which Samuel Baloch proceeds is that once that declaration is in the field, that you're disqualified. Unless that declaration is set aside, you remain disqualified. That's the premise of Samuel Baloch, number one. Number two, Samuel Baloch also says that declaration is not right in your face, saying that you infer from the circumstances of the case. For example, वो कहेंगे कि आपने मिस डिक्लेरेशन की है, इससे इन्फर कर रहे हैं आप ऑनेस्ट नहीं, बिकॉज nobody is directly इस पे तो एविडेंस नहीं ना आप ऑनेस्ट है, I mean आप इन्फर कर रहे हैं. That's what Samuel Baloch also says. So you construct it, you say कि आपका फॉर्म गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम कंस्ट्रक्ट ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं. These are the two premises on which Samuel Baloch proceeds. Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through H63H and went through a actual conviction, he comes back, and there are a number of other offenses where he commits even a heinous crime, he comes back. तो बस इसका हमें आप बताइए कि the fact Samuel Baloch goes on the premise that declaration on the civil side done will continue as long as that declaration is set aside. My lord has properly rephrased Samuel Baloch, but my argument is a bit different from that. Right. My argument is any declaration coming from a high court in a constitutional jurisdiction. We understood that's not a declaration, so that's all those declarations are out. Only court of plenary jurisdiction is elected. Understood. आगे चले. Now, the whole argument revolves around whether सुप्रीम कोर्ट में ताहल नहली के केस के हवाले से समाअत जारी है. इस मौका पर वकील की जानिब से ये कहा गया कि आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती हैं. we can interpret 62(1)(f in view of 63(1)(h). But if they are distinct, then we cannot interpret these two. We cannot try to resolve the ambiguity. So I have to demonstrate that Article 62 is distinct than Article 63. Is it not dependent? Article 62 is not dependent upon 63. No, my lord. How do I demonstrate that? If I just go to Article 62, it says a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless it talks about an event prior to the election. Yes. My lord, 63. I don't see much turning on your point, but shall I proceed with it? A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura if in 63 after the election, after the
he becomes member, the event, any of the event given in 63 can trigger and he can be disqualified. But in 62, after he has election की आप बात no कर रहे हैं। event subsequent to the nomination can disqualify him. I don't agree with you. Because if that is the case, then a non-citizen can contest elections, which is not provided for in 63, which is only provided for in 62. So I don't think this, जो आपने distinction draw की है, I don't think anything turns on it. My lord, 62. It says he's a citizen of language. Pakistan. This provision is not found mentioned in 63. Suppose a non-citizen files in a nomination papers and somehow gets elected. So you mean to say that challenge cannot be made about him? I would not agree with that proposition. My lord, because entire क्या? section of 62 has to be read in view of the opening clause. Article. It says a person shall not be qualified to be elected or chosen. कुछ शुरू ही तो नहीं था। ऐसे ही अमेरिका आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समात इस वक्त बराह रास्त जारी है। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे है? doesn't hold any water. Let's read first disqualification. He is a citizen of Pakistan. Suppose Mr. James Gray from America comes and contests, born American citizens, never been a Pakistani citizen and gets elected. Please wait. Now go to 63(1)(c). He ceases to be a citizen of Pakistan. That is, a person was a citizen of Pakistan, has now taken on citizenship of America. So you are saying, yes, once that somehow Mr. James Gray got elected, you can't touch him now. ये sorry to say, ये आप ऐसा distinction not draw करें. My lord, I am not saying this. Mr. Khurram, there's one way of looking at it. Just read the first line of 62 and the first line of 63. It will show to you that it's interchangeable. There is hardly any difference. जरा पढ़ें. A person shall Not be qualified. to be elected. रुक जाएं. आप 63 पढ़ें. A person shall not be disqualified. From being person elected. shall be disqualified. From being elected. So From both being are elected. happening before the election has taken place. Elected The or word is- chosen. हाँ. वही बात है. दोनों चीजें एक है. फर्क नहीं पड़ना Disqualified or qualified है, but it's synonymous. I mean, it makes My no lord, difference. 63 का जो second तो फर्क क्या पड़ना है इस आर्गुमेंट से आपके? How will it support you? So because if I can establish, if I can convince my lordships that they are two distinct sections because of their, Because there are two distinct sections, but what will turn on it? ये बताएं ना. then we have to interpret 62(1)(f) only. तो वही उसी पे तो आप हमको ले जा And we रहे do हैं. not have to interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). चलें 62(1)(f) को कर लेना फिर आप. आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 62 and 63 are distinct articles and we cannot interchangeably read them to give them a meaning. My lord. So उनको separate पढ़ेंगे, इनको separate. We've understood your point. आगे बढ़ें. थोड़ा सा स्पीड कर ले if you don't mind. We don't want to leave this case unresolved. 10-15 more minutes. Now, when I distinguish that they are two distinct, then we have to read 62(1)(f) on its own. Every word has to be given its meaning. चले चले थोड़ा जल्दी करें. Mission is that when we will read 62, then as long as the declaration by a court of law is in field, disqualification will remain. Court of law declaration is the Supreme Court itself. ये point पे आ जाइए ना. Supreme Court itself cannot give in any other jurisdiction other than in its appellate jurisdiction हो from गया the ना election tribunal. आपका फिर समीउल्ला बलोच वाला आर्ग्यूमेंट है ना कि once the declaration is there, 62(1)(f) has to be read alone. Once the declaration stands, disqualification stands. My lord. And it goes on as long as the disqualification. So the question to you is that we have to look at the Constitution in totality as a whole. Does it not appear odd to you that
for other crimes as big as perhaps treason and G and others, you can always come back and contest election. It's not a lifetime situation. But for a civil wrong, which could be as small as committing a misdemeanor of misdeclaration or just lying through you've omitted one entry in a return, the punishment in a way is for life. But if I were to go murder somebody, if I would commit treason, if I were to kidnapping, I could come back and contest election. Where from the tribunal gets the powers for life time disqualification? It has declared. No, where from gets the powers to declare him Has for life? declared a decree given remains intact for all purposes. We've understood that. Next point. Now this argument basically it lies in Islamic principles. If you look at PPC, out of all those offences, there are very few offences in which mens rea is dishonesty. My submission is, wherever mens rea is dishonesty, we are talking about public office holder. जो आपने you just very casually referred to Islam, either back it up because I completely disagree with you. You have to back it up. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam, and then they became Khalifs, Khulfa Rashideen. तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस. This just don't throw in Islam just like that. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का principle है, राय रास्त पे principle वापस आने का principle है, मुस्तकीम शारे मुस्तकीम पे वापस आने का principle है. All शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे. I mean, we are. तो ये आप ऐसे just don't throw in Islam to give it a validity. No, my lord. What I am submitting is, if repentance or tawbah, when we look at it, repentance और तौबा की तो बात से आगे मैं चला गया हूँ. that's what I am submitting. These are 3 things kept by God to Himself. Number 1, Not at all. Izzat Zillat. Not at all. Let me make my submission. No submission. You refer to the Holy Quran. You can't just make a submissions contrary to Islamic principles like this. ऐसे नहीं होगा. Could I change the subject a little? Let me just introduce one other aspect. Let's stay on 62(1)(f). If we look at 62, some of the disqualifications or qualifications are mentioned in the Constitution itself, like he has to be a citizen, the age and all. This is specifically provided. 62(1)(f) brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the Constitution. It is a declaration of disqualification under declaration of contrary under some law. And if the law, Parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the Constitution. It is providing that any declaration in 62(1)(f) is arising out of a law, not of the Constitution. Because court of law ne karni hai na disqualification. That disqualification is arising out of a law, and the Parliament goes ahead and says any disqualification under the law has to be for 5 years. So then, with that 5 years amendment brought in, isn't the period being provided for 62(1)(f)? Because the Constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law, and law has been corrected and given a period. So there's a distinction. Had there been a constitutional provision, disqualification like age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar Federation of Pakistan. It
That is the case where Contempt of Court Act 2012. हमने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, प्रोपोजिशन बता देना प्लीज। My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the That's what I'm trying to tell you. Add it in the Constitution, because how do I demonstrate that whether the court can amend the constitution, court can interpret it? interpret in a manner to amend the constitution or to No, my read lord. into the No, my constitution. lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होनी चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है। ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए, ठीक, क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आप सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 162(1)(f) इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। That's what I'm saying. That in my Declaration case, FA degree was forged, BA degree was forged, trial क्या आप हमें डिक्लेरेशन कहाँ से आया आप आपके general केस में? principle- election tribunal. देखिए खुरम साहब, एक चीज है, देखिए स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, देयर इज नो कंफ्यूजन इन माई माइंड दैट टू सेट aside a judgment, the premises on which that judgment stands needs to be taken away. So if the judgment stands on a law, then there could be an amendment in the law, and that foundation of that judgment on which it stands is taken away, and that judgment is nullified. If the judgment stands on the Constitution, constitutional amendment is required to take care. There's no, as far as I'm concerned, no. I'm saying in this particular case, 62(1)(f) is not a disqualification. The judgment does not stand on 62(1)(f) as such. It stands on a declaration by a court of law. My lord. That declaration is not done through Constitution. That declaration must be of based on some law. That law now provides a period of 5 years for such declarations. Hence, that premise, that declaration that's coming out of a law has been given a period. So wo khatam ho jati baat, 5 years then plugs that problem. Election tribunal has to determine on the basis of qualification, disqualification given in Election Act as well as 62-63. Why I am saying is I have also appended parliamentary debate from Senate on the amendment. It's at page 28. They have admitted it's silent. Once they have admitted it's silent, the only requirement. What do you mean? It is admitted is silent. What does this mean? I mean, in parliamentary debate, which we can look into. So why don't you look at the Constitution itself? I don't know. देखिए ये from Hebdo. Do you know what Hebdo was? My lord. One dictator. My lord. Throwing out everybody. My lord. Followed by another dictator. Throwing out everybody. Following by a third dictator. Throwing out everybody. Are you forgetting all these things? No, please, एक second ठहरिए ना. The Constitution, original Constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. Why you give it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. We can, जरा बात तो सुन लेना. My lord. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे, या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं। जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, जो अब 326 से पहले कम होते थे, वो एक कानून साजी कर लें और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी, और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने एब्डो कर दिया, तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग माय फादर वाज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ही हैड द मिस्टेक ऑफ helping make Pakistan. But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing. Then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. अगर देखिए एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट, मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से। काफिर को तो पता नहीं रोशनी है नहीं, काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ,
ठीक है, उसको पता नहीं, मुनाफिक को पता हो के करता है, अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रॉफिलिगेट अमीन वगैरह। ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना किसी को फिट करना, ये बातें आप व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट। यू आर सेइंग अ डिस्क्वालिफिकेशन बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर, a rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है, ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम हुआ आपके पास 8 थे, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि यू आर अ प्रॉफिलिगेट, यू वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट। कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रॉफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड। So let's not forget small things. We start focusing on small things. Look at the larger picture. Look at the context in which these amendments were brought into the Constitution. Look at Article 225. उसको आपने totally नजरअंदाज कर दिया है. Except you're not even saying a word about Article 225. It says no court shall. वहाँ आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा। तो ये आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए। Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First one, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है। प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें, जो सवाल का जवाब आपका लगे। I agree with you. I am against dictatorship. I am for the constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is, when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62, at the same time they added 10A. ये तो पार्लियामेंट ने किया, ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th amendment में। 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे, वो हमारे elected representative होते हैं, ठीक है, उनकी cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it. ये नहीं करें ना, आप मजीद पॉइंट आर्ग्यू करें। I am submitting my arguments on the basis. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताएं, क्योंकि you're not making headway now. You stopped. My lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, during the parliamentary debate, it was admitted that Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says, we don't need to. It's obvious it's silent. It's silent. Yes. Now my submission is, once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord. Suppose we say 232 is not good law. My lord. And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. My lord. Then there is no disqualification at all, not even for a day. My lord. Yes? Yes. Then they have to amend. So you the say the wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62(1)(f), बात नहीं समझ but रहे they did not. अच्छा, चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें। देखिए, अगर इंटेंशन होती है लेजिस्लेचर की, वकील साहब,
अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सजा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया। तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का, सिंपली इट इज if they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62(1)(f), like they did it. Why not we should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, तो कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस that's all। या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है unless proved to the contrary, ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स, क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित। इस वक्त बराह रास्त समात जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समात कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ताहियात नाहिल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ने सियासतदानों की ताहियात नाहिली से मुतालिक सवाल पर रिमार्क्स दिए। So your second A argument, lot of people to be heard. second Let us not speed it argument is up, that please. only constitutional amendment would have done this. My lord, Go. that is my Aage submission, chalo. only constitutional We understood amendment. And I support this argument with this thing as well. In Article 62, they have given various period of disqualification, 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Sorry, repeat yourself. ये आपने repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of. So I can just pose you a question. If in Samiullah Baloch, I'm writing now the judgment of Samiullah Baloch, imagine it. And I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samiullah Baloch, correct? For no logical reasoning, it is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation, on some logic. Either you should say I would be wrong in saying 2 years because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only 2 possibilities. No, why not 2 years? I write Samiullah Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly, so it's all up to do with my mind. But it's Nothing to do with the Constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड करें ना इस If बात it's को। silent, that means Understood your point. until it's in field. चलिए अब अगला पॉइंट या फिर हम किसी और से पूछें। This larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. That's Reinterpret. आर्टिकल 62(1)(f) कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फ़र्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि वकील ने सदा की कि पार्टी इंतहाबी निशान का इशू है, इंतहाबी निशान अलॉट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आईनी अदालतें हैं जहाँ आईनी दरखास्तें दायर होती हैं। On the vagaries of Election Act 2023, if we are only in appeal, then we cannot argue on the vagaries of the Election Act. और तो वैसे चैलेंज नहीं करते उसे. You have not challenged worries of 232. That's not the question of worries of 232 is not. Nobody has challenged the worries in the High Court or in this court. My lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the There has not been petition. decided yet. वो तो तुम्हारे सामने नहीं. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with section 194(3) petition. So my understanding, the way I Your read the understanding should be found, the answer is in the order, the first order that we passed. Since election are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that.
Now, if you want utter total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232, another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly, we want clarity, one way or the other. The returning officer is not a competent lawyer as yourself, it's maybe a bureaucrat, so give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under section 27 or order 27A to all the Advocate General and Attorney General. The world, to the whole of Pakistan, we issued notice. You might as well decide upon the varies of this thing. नहीं, वो भी कर लेंगे, आप बता दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. That is my submission. Unconstitutional. मैं कहता हूँ इस unconstitutional. I rely on Bas Mohammed judgment. एक बात बताएं दे कि आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62 और F में कुछ बताया नहीं, उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं. Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law, they have framed the law, They had to interpret the constitutional provision. उन्होंने कह दिया कि ये हमारा विजडम था. They had to frame it under 239, 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की साइटेशन लिखा है 2012. ALD 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the Para 50. for declaring the law ultra vires? Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want sometimes tough questions help us resolve our own difficulties we are having in understanding things. My lord, Thank you very much for giving patience. Nani, thank you very much. Who will next? Amicus को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो आप आ जाइए, उस्मान साहब आ जाइए. और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब. सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड. He is senior, we'll ask him first. सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें. My lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया. जी सर. जी. I owe an explanation, my lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए. इधर माइक. हाँ. While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Mohammed Kashif, that is, my lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake degree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and in that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored. Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? My lord, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब, जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं. हम इंडिविजुअल केसेस 5 ईयर बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन.
तो हम आपके इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों वो फिर अलहदा सुनेंगे जी। तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं। मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ जी। एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ जी जी कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. एफ था ही नहीं ओरिजिनल में। कर रहे हैं ना सपोर्ट 18th amendment से पहले They could do so, amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out that was brought by a dictator in it. But then there were subsequent parliaments and they, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। और फिर वो माइनॉट जो आया है 62 में अमेंडमेंट की है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया। ये बात आपकी सही है बिल्कुल। दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ। समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं। आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी, उसके पेपर रिजेक्ट किए ना जी उन्होंने, लाइफ टाइम जी। नहीं, इस केस में जी एक इलेक्शन था जो तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ। तो आई एम कंफ्यूज्ड, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दो लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं। आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट, मैंने सर अर्ज कर दिया, जो अल्लाह बीनू केस है और जो केस है उसका सरदार, आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक। क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये है जी। चलिए, और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। इस वक्त समाअत सुप्रीम कोर्ट में ये बराह रास्त जारी है। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो कानून अब कहता है ये मुद्दत 5 साल होगी। पार्लिमानी बहस में तस्लीम किया गया 62(1)(f मुद्दत पर खामोश है। नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, दुरुस्त या फिर गलत? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। पार्टली अडॉप्ट करूं लेकिन मुकम्मल नहीं जी। मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बारे। नंबर बताएं कि इसका? मेरा नंबर है जी 984 और 2018 मार्च। आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट है, अपेलेंट? एपिलांट हूं। अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले। चलिए अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का। विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। ये कायनी बिला फरमाइएगा 199 में मालूम जी। पहला माइलॉट सबसेक्शन क्लॉज 1 में पढ़ूंगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। नाउ आई विल गो टू Roman 2, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब जो B का
रोमन 2 मुलादा इस फरमाइएगा। जगह ना उस्मान साहब ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना? जी मालूम। इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर। नहीं मालूम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया। ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जी मालूम। सरकार के खिलाफ सरकार के लिए, आम आदमी के लिए थोड़ी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पहला सवाल ये था मालूम का डेक्लेरेशन क्या 199 के ना हो सकती है। अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी। On application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों की jurisdiction है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This show is the करें। original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of quo warranto can be issued by the High Court. जी मालूम। This is the only declaratory power यही है। मालूम बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले, आगे बढ़ें। आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम। इसको इस तरह देख लें कि मान लेते हैं ये बात है, तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी, तो हाई कोर्ट कहेगा हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस। मालूम यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर उसके बाद लाजमी नहीं इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज ठीक भी ठीक समझे, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे यूँ देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा मालूम ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है मालूम। ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल jurisdiction of the court functions in connection with the affairs of federation, a province or local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये ऑर्डर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration इन बिल्ट है इसमें। और इसी तरह देखिएगा मालूम बी का ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में, जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है वो रिट में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा अगर ये राइट ऑफ अपील दी हुई होती तो पहले अपील में जाते हैं। बी का 1 देखिएगा मालूम आप, इसमें प्राइवेट पर्संस की हेबियस कॉर्पस के हवाले से वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल। आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले, व्हेन देयर इज नो रेमेडी। मालूम बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन लॉज में अब काइंडली सी मुलादा फरमाइएगा। बी ये जो सी है मालूम, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करने में फेल हुए हैं। पॉइंट ये है मालूम, आप हमें से पढ़वा रहे हैं। पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन के बगैर, मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। और इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता? मेरी हम्बल सबमिशन ये है। ठीक है, दे सकता है। चले आगे बताएं, आगे बताएं। अगली बात जनाब देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f) है मालॉर्ड, एक सवाल मालॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं, मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा मालॉर्ड। अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू। मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा बात है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े जी मालॉर्ड। उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना? जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वो ही वाज़ेह तौर पर कह रहा है। सही है। अब माय लॉर्ड जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं, सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं। और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी जो है वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड। और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी
a dispute between one party or another party, and that can be granted under Section 9 of the CPC. So this argument is, in my humble submission, is not correct. That Section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now, my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे, my lord. ऑनरेबल my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डेक्लेरेशन दी जाएगी तो वो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डेक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिगेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डेक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा, कोर्ट की डेक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। And what is the definition of Sadiq and Amin? Or what is the definition of Sadiq or Amin? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए, कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा डी एंड ई जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, एफ को नॉन अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मींस कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए। अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा, उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जॉन, तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की। ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, I'm just trying to understand, ना बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फलां शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फलां शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंट लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डेक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड थे,
हैं, इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और द इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वो ही फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल समझ। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात ये को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। The same learned author judge has also authored the judgment in Faisal Wavda case. मैं उधर ही आता हूं। उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो can you reconcile the two judgments? Yes or no? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावदा के Can you reconcile them or नहीं not? हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं वजह हो से सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो मैं सकता, आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल बिल्कुल ठीक बात है। इससे मेरी तो सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है। फैसल वावदा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी। अलादीनो भाइयों केस मालूम, ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच करेक्ट लॉ। कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम ग्राउंड पे 591 उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ। और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाई किया गया है, इसको कोट किया गया है। पिटीशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम, ये मिस्टर जैसे उमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा वाला भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के बाद तो इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उस पे कंसीडर किया। नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर द समीउल्लाह बलोच इज एपरेंट ड्यू। आप कहां से पढ़ रहे हो? मालूम मैं तो मुकम्मल कर दी मालूम। यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मतलब आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोज़ मुलाज़ा फरमाइएगा जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। No, my lord, that is in field. But this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samiullah Baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samiullah Baloch is a 5-member. My lord. To that extent, it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। आप काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर।
2021 SCMR 988 my lord. सॉरी दोबारा कहिए 2021 SCMR 988 टाइटल 988 मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ my lord. इसका टाइटल मैं my lord सॉरी my lord. जी हेलो टाइटल में ढूंढ रहा था मालूम सॉरी हम आपको बता देते हैं सॉरी केसरानी केस है केसरानी. अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी. जी मालूम. अब मालूम गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डायरेक्ट टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी. the same author. शेड्स नो माय लॉर्ड दैट इज द जजमेंट. लेकिन one of the member was the same. जी यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया गो के मिस डिक्लेरेशन थी. अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती. आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी the court is trying to get away from some. My lord, and last judgment on this point. But the learned author is also member of the bench, my lord. though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. My lord. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023. PLD 2023, Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई. इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड. एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था. एक मिनट जरा आ जाए. ये जरा दे दें 23. ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f में या नहीं होगा. उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे माय लॉर्ड पेज 82 पे डील किया माय लॉर्ड. फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है. इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही माय लॉर्ड जजमेंट. ये 82 किस पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है माय लॉर्ड जो रेलेवेंट है. हमारे यहाँ किस पार्ट में? ये फरवरी के पार्ट में फरवरी पार्ट भी दे फरवरी का पार्ट. इसमें दोनों जगह चल रहा है. इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात कर. जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है माय लॉर्ड. जी पेज 82 माय लॉर्ड पैरा 4 योर ऑनर. ये शॉर्ट ऑर्डर एक सेकंड आने दें. माय लॉर्ड. Today you're all charged up, very good, precise to the point. थैंक यू माय Page 82. Paragraph 4. लॉर्ड. माय लॉर्ड जी मैं एडिट माय लॉर्ड. जी. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it may be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate the question stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा माय लॉर्ड. 63 वाली बात है. अगर 63 की बात हो रही है, जी नहीं इसमें फाइनल में 62 आ गया माय लॉर्ड. डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें? माय लॉर्ड इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी. सॉरी इसमें माय लॉर्ड ये इसी के आखिर में है माय लॉर्ड. सॉरी मैं गलती से कह गया. ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में एज मैं माय लॉर्ड. अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड. माय लॉर्ड थर्ड पार्ट में तो नहीं मालूम डिसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है माय लॉर्ड. ये इसी में वेब में है. सभी में होगा. 146 पेज माय लॉर्ड. 146. 117 पेज 146.
May I read, my lord? 146. Para 117, my lord. The last para of Ji, my lord. majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand asked accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समूला ब्लोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन ये ठीक बात है। 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं, जरा एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? तो आपका जो पहला मौक़िफ़ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट में। ऐसे नहीं है, काइंडली देखिए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका मकसद था, बजाय इसके कि समूला ब्लोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकल 168 पैराग्राफ 10 एंड 11 पढ़े तो 168 इसी बुक पे। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में कर रहा है। 168 मालूम, पैराग्राफ 10 मालूम, 10 and 11 both 11। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का ये केस है, जिसके मुतालिक 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, नाअहली की मुद्दत की तशरीह पहले सुप्रीम कोर्ट ने की, फिर पार्लियामान ने की है। मजीद बोले कि ताहयात नाअहली का केस की हवाला सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। They cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents.